यहां पर बैठे हुए अधिकांश लोग, आप लोग भी, कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि अज्ञात का भय हमें भविष्य जानने के लिए प्रेरित करता है और हम सोचते हैं कि यदि हमें आने वाला समय पता चल जाए तो हम विपत्तियों और कठिनाइयों से बच सकेंगे और कुछ उपाय करके अपने लिए शुभ फल अर्जित कर सकेंगे। लेकिन अंततः नियति या डेस्टिनी यही सर्वोपरि है। एक प्रसिद्ध छंद है, कर्म गति टारे नाही तरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, मन में विपत्ति परी। पढ़ा होगा इनमें से कई लोगों ने। यानी महाज्ञानी मुनि वशिष्ठ ने खूब शोध कर, खूब विचार करके और सारे हॉरोस्कोप वगैरह देखने के बाद यह विवाह लगन तय की थी, परंतु उसके बाद भी राजा दशरथ की मृत्यु, राम और सीता का वनवास और सीता जी का अपहरण सब हुआ। राम सीता जी का पूरा जीवन कष्ट में बीता। इससे एक बात स्पष्ट है कि दैव गति टाले ना ही टली। यानी संसार के सबसे बड़े ज्ञानी और ज्योतिषी भी उस कर्म गति को नहीं बदल सकते जो पूर्व निर्धारित है। उस कर्म गति को नहीं बदल सकते जो पूर्व निर्धारित है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम निराशा या निष्क्रियता में डूब जाएं। इसका यही संदेश है कि हमारे हाथ में केवल एक ही साधन है, वह है कर्म, और उसी कर्म को हमारा सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए। आज हम भारतवासी इसी कर्म पथ पर अग्रसर हैं। अनथक परिश्रम, अडिग संकल्प के साथ हम अपने देश को इतना सक्षम और सशक्त बना रहे हैं। कोई भी अनदेखी चुनौती, ऐसी चुनौती जो दिखाई नहीं देती है, कोई भी अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। नियति यानी डेस्टिनी हमारे भाग्य का निर्धारण करती है और कर्म ही उसे फलीभूत करता है। और इस विश्वास के साथ हम सबको एकजुट होकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। साथियों, वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 2030 तक अनुमानित $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुमान के अनुसार यदि एवरेज ग्रोथ रेट्स को देखा जाए तो भारत 2038 तक परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। एमजे अकबर साहब ने एक जगह लिखा है, यू मे रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इसलिए अगर भारत का वर्तमान उदय समझना हो तो हमें 11 साल के हमारे कार्य देखने होंगे। यह सब अगर संभव हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण ही हुआ है। वहीं अगर आप साउथ एशिया के कुछ देशों की हालत देखें तो आप समझेंगे कि भारत कितनी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और एमजे अकबर साहब ने पाकिस्तान के बारे में अपनी एक किताब में लिखा था, पाकिस्तान एक जेली स्टेट है और जेली स्टेट एक ऐसा देश माना जाता है जो हमेशा अस्थिर रहता है मगर बिखरता नहीं है। आज दुनिया भी पाकिस्तान के बारे में यह समझ सकती है, लेकिन आज जैसे पाकिस्तान की हालत है उस संबंध में बिखरेगा या क्या होगा ये ऊपर वाला ही जाने, मैं नहीं कहना चाहता कुछ। साथियों, अंत में मैं एमजे अकबर साहब की उन किताब के लिए अनेक बधाई देता हूं और इस किताब के बेस्ट सेलर बनने की मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। और इट इज ऑफन सेड दैट द जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। मगर मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जब जर्नलिस्ट की भूमिका में एमजे अकबर साहब जैसी शख्सियत होती है तो उनका लिखा हुआ हिस्ट्री का फर्स्ट ड्राफ्ट भी होता है और लास्ट वर्ड भी होता है। इसलिए मैं आशा करता हूं
कि आने वाले समय में वे ऐसे ही अनेक इंटरेस्टिंग और इंटरगोइंग विषयों पर लिखते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुस्तक के लेखक एमजे अकबर साहब को हृदय से शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। My distinguished elders, friends, everyone in the audience, as I perhaps you recognize, words fail me a little. Thank you. Perhaps no two words in the dictionary are more powerful than thank you, if it comes from the heart. एक प्रश्न तो मेरा मैं लगता है कि हमारे इस मंच से भी उठा है, आपके मन में भी उठा होगा, आपके दिल में होगा, पूछे ना पूछे, डू आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? किताब लिखना एक बात होती है, डू आई रियली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? आई प्रॉमिस यू, आई होप आई हैव अ रैशनल आंसर टू दैट. I believe in astrology because I am rational, not because I am irrational. Why? Why should I believe that all knowledge is only limited to the periphery of my comprehension? Who am I? I don't even know what my brain is. You know only 10% of your brain. If we had an understanding of 90% more of our brain, how much more would we comprehend? We don't know. So what right do you have to deny something which may be right? Doubt is the first principle of progress. If you do not doubt yourself, there is no intellectual progress. There is no question. Hence, the best thing that you can do to your mind, my friends, is to keep it open. There is nothing worse for us than a closed mind. Belief in astrology is a very challenging belief, because to sustain it, it must have the credibility of events. Jyotishi आपको कुछ भी कह सकता है, but if after that events do not justify it, it will not last. As was noted, हुमायूं खुद एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर थे. 7 दिन पहले भाई मुगलों की जो राजा थे, उनकी राजाओं की आदत थी, तो राजाओं की आदत में नेचुरली स्पिरिट्स एंड ओपियम भी was part of their life. 7 दिन पहले he told all his servants, he used to take a daily dose of 4 pellets of opium. 7 days before that he told his servants, सिर्फ 7 दिन का बनाओ, because I will not see the 8th day. Exactly 7 days later in the morning, he says, and all these details are there, and all these details are from primary sources, either in Persian or Sanskrit or translated by great historians like Rajnath Sarkar, all primary sources. That morning he tells his servants that today a great injury is going to befall a great man. He doesn't know that when he comes down those steep steps he has climbed every day and come down every day, he used to go to the roof to watch the stars. Have you ever looked at the stars? If you look at the stars and don't believe in astrology, there's something perhaps wrong with us. This universe is an extraordinary place. To believe that there is no creation, that there is no logic, that there is no pattern to it, is individual ego and arrogance.
There has to be some creator. I don't know who. I don't know the name of that creator. I only know that everyone has chosen something. And let everyone choose their own way towards that. Their belief in astrology was very deep. I will only give you a glimpse. Akbar, Jahangir, Humayun, they all wore clothes in the color of the day's zodiac signs. The reference to Akbar's birth, that story is absolutely astonishing. In 1552, when he went there to the Rana of Umar Court's fort, अच्छा वो भी किला के अंदर जाने के पहले जोची बोला कि यही समय होगा. जिस दिन पहुंचे उस दिन जोची से नहीं आज शुभ दिन नहीं है आप दूसरे दिन ही मिलेंगे. तो फिर दूसरे दिन ही भेंट हुई. And then he was sent off कि ठट्टा जाइए क्योंकि he was basically hired as mercenaries. He left only one man behind, and they were Muslim astrologers. It is not simply that the astrology was part of an older tradition. It is part of an older tradition that came from Genghis Khan. And it is my view that all societies which respect that their culture is much older than their religion, they integrate. Please think about it. That they integrate. You will be perhaps shocked that the first volume of Abul Fazl's Akbarnama, there is enormous praise for a Mughal shaman goddess equivalent to Ma. Her name is Alankua. And it is from the radiance of Alankua, this goddess, that this generation is born. And this worship gave them the cultural freedom to accept that there are other forms of worship. Even when Babarnama, when the mention there is of God, most often the mention God is called Tengri, which is the Mongol, Genghis name for God. We have used the word Khuda for God in common language. Khuda is not an Arabic word, it's a Persian word. It is a much older word that comes from the Persian tradition. Sir, खुदा जो लफ्ज थी उसके खिलाफ जहाद कौन शुरू किया था शायद आपको पता नहीं है. वो खुद मुझे बताए थे एक इंटरव्यू में, वो जनरल जावला, क्योंकि उनको कल्चरल असॉल्ट करना था. एनीथिंग दैट बिगैन प्री. Why is Pakistan dysfunctional? आपने जिक्र किया थोड़ा, तो मैं भी उस विषय पे तो एक लफ्ज बोल दूं. Why is Pakistan dysfunctional? Not because of Pakistanis. Pakistanis people are the same as us. It is dysfunctional because it refuses to acknowledge the Indus Valley civilization as part of its civilization. It refuses to acknowledge Ganga Jamuni civilization as part of its civilization. That is why it is dysfunctional. ये जो कहानी है of the birth of Akbar, it is absolutely stunning. Because the only person Humayun left behind when the labor in the fortress was Maulana Chand, his astrologer, his traveling astrologer. They all had astrologers with them. So in 2 or 3 days, news came out that the labor pains had started. And this Maulana got frantic, completely frantic. नहीं, अभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता. So the women naturally started laughing at him and said, listen, Mullah, when the laws of nature begin, nobody can stop it. And then in a startling sort of decision, it's all described fully. Please just go and, read it for yourself. He went and took a woman, and in the darkening shadows, he shoved the woman's face in front of this, his mother in labor, and she got so frightened that her labor pain stopped.
And then exactly as he said, a moment will come in 5 years which has not come in 1,000 years. और जो बच्चा पैदा होगा उस जमाने में वो, अच्छा वो कहता है, not when the Mughal Empire is flourishing. At that time, Humayun did not have money to eat. He was in exile. He was being killed. So this prediction, when I said that, God can be addressed in any language, trust me, the Quran permits you to do so. This verse is not mentioned. Because there is an ayat of the Quran which says, I have sent a messenger in every language. So multiculturalism is part. Quran says, Lakum dinakum wa iliya din, your faith for you, my faith for me. VK News, राष्ट्र के नाम।